based on that. First is what Comrade here referred to in the beginning, that on the Facebook page people are asking why we were very happy with the discharge of these 9 men by the Makoka Special Court, and why we are questioning. ये जो हमारे सामने एक बाइनरी लाया जा रहा है कि good agency versus bad agency, कि there are that we were very happy with NIA as long as it was seeking the discharge of these 9 so-called semi-activist or Muslim men in the Maligaon 2006 case, but now we are questioning that same NIA. So if we are going with the NIA in the first instance, we must perforce agree with what it says in its new supplementary charge sheet in the Maligaon 2008 case. I think we should reject this kind of binary. There are some good agencies and some bad agencies. We know from experience that every single agency in this country, whether it's the greyhounds, whether it is the crime branches, whether it is the special cell, whether it is ATS of different states and so on, they have all framed innocent youth in different terror cases. So this binary, I think we should reject. We've seen over time that there have been internal conflicts and tussles. I mean, from outside it looks like one seamless monolithic whole, the Indian state, but there have been tussles and conflicts between different agencies, and we recognize that. However, that does not mean that the operation of these agencies, happens in some abstract rule of law situation. If you were to look at these statements, as Hatosh pointed out, the refusal to recognize the existence of Hindutva terror till 2008, 2009. I mean, you look at even when, for example, the previous Sushil Kumar Shinde, when he spoke in the Jaipur conclave referring to saffron terrorism, there was like an outburst in all the newsrooms. I mean, there was a collective of how can you link religion with terrorism? It was complete blindness to what has been happening earlier. Islamic terrorism is normal. It's been normalized. Saffron terrorism, aapne kaise bol diya? How can you link a religion with terrorism? And then you had all these experts walking in and out of TV studios, including very senior retired and serving police officers. For example, somebody like M.N. Singh, who was the former police commissioner of Bombay, who investigated the so-called Black Friday blast, the 1993 blast. He came on television and said that there is no such thing as, it's an oxymoron. Hindutva terrorism to ho hi nahi sakta. There is no such. These are only retaliatory sort of blasts. As though the level of retaliatory blast is somehow lower than so-called offensive blasts being conducted by Muslims. So this refusal, and you have Prakash Singh, for example, who is the poster boy of all policemen asking for reforms, which is basically to say that police should be autonomous of political interference. We should be allowed to do whatever we want to do. That's the model of police reforms that Prakash Singh wants. And when he was questioned about why there are larger number of Muslims under trials in jails, he said, because they are the ones who are involved in communal violence and terrorism. So obviously there will be more Muslims in jails than non-Muslims. So this is the kind of prejudice, and we must realize that this is the kind of ideological political climate, as Santosh rightly pointed out, that there is a political consensus on this. There is a large-scale political consensus until actually the Hemant Karkare-led team of ATS cracked this case. There was absolute, we were campaigning on the Batla House issue. A lot of friends, even from the left, told us, you people are in denial. आप लोग समझते नहीं है, बहुत radicalization हो रहा है मुसलमानों में, और आप recognize कीजिए इस बात को, और आप denial mode में क्यों रह रहे हैं? And there was absolute, in fact, they were the ones who were in denial mode about refusal to see that there could be non-Muslim terrorists. So this is the kind of ideological political climate which operates, in which terror investigations take place, and if I may add, judicial adjudications also take place, which is another story which we can come to at some other point. तो ये कहना, ये equivalence जो अब हम लोगों के सामने रखा जा रहा है कि भाई देखिए इनके ऊपर तो टॉर्चर करके इनसे कन्फेशंस लिए गए. पहले let me clarify and let me join him in saying that we absolutely oppose Makoka on all cases. Makoka जैसा law Indian statute books में नहीं होना चाहिए. Makoka कब 1999 में लाया गया, and remember the background is these gang wars in Bombay, and this was
preceded by a series of these fake encounter killings by the Bombay police, by Bombay crime branch and so on, जिसमें उसके बाद पता चला कि बॉम्बे पुलिस खुद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बन गए और एक गैंग को एलिमिनेट, दूसरे गैंग से सुपारी लेने लगे एक दूसरे गैंग को एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद जब गैंग वॉर नहीं थम रहे थे तो मकोका को लाया गया और उसका जो पर्पस था, इट वॉज टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम and for coping with criminal activity by organized crime syndicates. But within the act also there was this leeway कि terrorist cases में मकोका को apply किया जा सकता है। So you have one case after another, बहुत सारे सिमी के cases मकोका के अंदर चलते हैं और इनफैक्ट शाहिद आज़मी जब जिंदा थे और ये कई सारे केसेस में लड़ रहे थे तो उन्होंने एक पिटिशन लगाया था कि क्योंकि वो औरंगाबाद आर्म्स हॉल केस, मालेगांव 2006 और जिसको 7/11 केस बोलते हैं, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस, उसमें मकोका के एप्लीकेशन के खिलाफ वो कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट ही चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मकोका टू बी अप्लाइड इन टेरर केसेस एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड फॉर सम टाइम स्टेड द एप्लीकेशन ऑफ मकोका, स्टेड द प्रोसीडिंग्स इन ऑल दीज 3 cases till it had settled. The Supreme Court finally said that Makoka is constitutionally valid and should be applied, but it said that it can only be applied in cases of in cases where there is a conspiracy to there's a promotion of insurgency rather than insurgency itself. तो अभी हाल फिलहाल मामले में बॉम्बे मकोका कोर्ट ने जो पुणे ब्लास्ट केस जो है जेम रोड ब्लास्ट केस, उसमें मकोका को हटाया है और लेकिन ATS फिर दौड़ के तुरंत बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि और भी सो कॉल्ड टेरर केसेस में मकोका हट जाएगा। तो हम जानते हैं कि मकोका किन केसेस में लगाया जाता है, किन केसेस में नहीं लगाया जाता है और कैसे ड्रॉप करवाया जाता है। एक फ्रेंच पोएट और राइटर है एनाटोल फ्रांस, जिन्होंने एक बार लिखा था कि रिच एंड पुअर आर इक्वली फॉरबिडन टू स्पेंड द नाइट अंडर द ब्रिजेस, which Walter Benjamin has used to explain how law is profoundly unequal, कि सब इक्वल है। मकोका आपको भी टॉर्चर करके मकोका से कन्फेशन निकाला गया, आपको भी टॉर्चर करके कन्फेशन निकाला गया, लेकिन हम जानते हैं who are the torturables in this country. It is, nothing is in abstract, nothing is in vacuum. There are certain categories of people who are torturables, and I do not see some activists under any circumstances in this country who can fall under the category of torturables. With this sort of prejudice, from the top of the hierarchy of the police right to the bottom, it is impossible that the charges that confessions were, for example, Aseem Anand's confession. Aseem Anand's confession is under 164 CRPC. It is not under Makoka. Makoka में confessions जो है पुलिस के ऑफिसर के सामने लिए जाते हैं और वो एडमिसिबल होते हैं, बाकी CRPC IPC में वो नहीं होता है। लेकिन जो असीम आनंद का जो कन्फेशन है वो 164 CRPC में है, जिसमें अगर आप पूरे प्रोसेस को देखें तो उनको जुडिशियल कस्टडी में 2 दिन रखा गया। 48 hours he was made to stay in the judicial custody. He was given time to reflect upon whether when he expressed his desire to confess, the court asked him, the magistrate asked him कि आप सोच लें इस पर, 2 दिन विचार कर लें, आप कन्फेशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, फिर वापस आइए। 2 दिन बाद आके असीम आनंद ने बोला कि मैं कन्फेशन देना चाहता हूँ। ये 2 बार किया, एक बार नहीं, एक बार पंचकुला में और एक बार दिल्ली में, 2 अलग अलग मैजिस्ट्रेट्स के सामने उन्होंने अपने बयान दिए 164 में। उसके बाद कुछ महीने बाद जब उन्होंने उसको रिट्रैक्ट कर दिया, लेकिन रिट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि 164 का बयान इनवैलिड हो गया। कोर्ट में उनको ये साबित करना होगा कि उनको ड्यूरेस के अंडर वो एक्सट्रैक्ट से लिया गया है कन्फेशन। तो और अगर आप इस 164 जिस असीम आनंद ने जिस प्रोसेस के थ्रू अपना कन्फेशन दिया, अगर आप इसको कंपेयर करें और केसेस में, अभी कुछ दिन पहले मैं जो ट्रेन ब्लास्ट हैं, जो उसमें अक्यूज जो कन्विक्ट्स हैं, हम उनके एफिडेविट्स पढ़ रही थी। उनके एफिडेविट्स में जिस भयानक तरह का और वो मकोका में ट्रायल चला है, उस जिस भयानक तरह का टॉर्चर का जो डिस्क्रिप्शन आता है, ATS ने किस तरह से उनका टॉर्चर किया, वो रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन आपको याद होगा कि आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले 16 मई को जिस दिन मोदी सरकार आई, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था अक्षरधाम केस में। अक्षरधाम केस में 6 में से 5 जो कन्विक्ट्स है, जिसमें से कईयों को फांसी की सज़ा थी और कईयों को लाइफ टर्म्स थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने कन्विक्शन के खिलाफ अपील किया था।
5 ने किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 को एक्विट कर दिया। और उसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें और उसमें किस तरह से, और रिपोर्टा में केस चला था, और किस तरह से कन्फेशंस रिकॉर्ड हुए थे। कन्फेशंस कोटा में भी आप जानते हैं मकोगा की तरह पुलिस के सामने कन्फेशंस रिकॉर्ड हो सकते हैं और एडमिसिबल एविडेंस होंगे। अब इन अक्यूज को डीसीपी के सामने लाया जाता है और डीसीपी 15 मिनट फ्लैट में उनका कन्फेशन 15 मिनट देता है कि जाओ रिफ्लेक्ट कर लो। यहाँ सीमानंद को 2 दिन मिल रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में, और यहाँ पे इन अक्यूज को पुलिस कस्टडी से लाया जा रहा है डीसीपी के सामने कि आप इनका कन्फेशन रिकॉर्ड कीजिए। वो 15 मिनट देता है, जाओ बगल में बैठ के 15 मिनट सोच लो कन्फेशन देना है कि नहीं देना है, और उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद वो वापस पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं। उसके बाद उनको मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, क्योंकि कोटा में जो प्रोविजंस हैं उसमें है कि पुलिस के रिकॉर्डिंग के बाद आपको मैजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड कराना होगा कन्फेशन। उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और मैजिस्ट्रेट का आप स्पीड देखिए, रिफ्लेक्शन का टाइम देता है उसको अक्यूज को, और जो 15-20 पेज का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड भी करता है, पढ़ के भी सुनाता है कि ठीक है कि नहीं, यही बोला ना तुमने, उसके और ये सारा काम वो आधे घंटे में कर लेता है। तो किस तरह, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट what Anton Franz said about everybody has a right to sleep under bridges, right? Everybody is forbidden to sleep under bridges. So law is profoundly unequal. Investigation, and especially terror investigations, are extremely prejudicial and unequal in this country. Now, does it surprise anybody that what is happening today is happening? I don't think any of us is surprised at all at what is happening. If you remember, right after the new government came into power, the bail application of one of the main accused in the Ishrat case was being challenged in the Supreme Court, and the CBI, which had till then one accused had been granted bail, and the CBI had till then, till 2014 May, been opposing the bail plea of that accused. But what we saw in the Supreme Court was that Pinky Anand, who had previously been the spokesperson of the BJP and on various television shows had decried the CBI line of investigation in the Ishrat case, had said that the CBI was a caged parrot, was acting at the behest of the Congress, and so on and so forth, and so therefore the CBI's entire line of investigation and entire investigation was faulty, fraud, dodgy, whatever you may call it. She comes to represent the CBI, and sure enough, in the Supreme Court, she did not challenge the dropping of challenge the giving of bail to the accused. And then there was, of course, series of bail being given to these police officers accused in a variety of encounter killings, from Sohrabuddin to Prajapati to Ishrat, and all of them were reinstated in plum positions in Gujarat police. So you have Abhay Chudasma, who was accused of running an extortion racket and of using the Sohrabuddin gang for his extortion racket, perhaps in recognition of his talents, was reinstated or was posted as head of the vigilance squad in Gandhinagar. So you have, and of course now you have P.P. Pandey, perhaps the first murder accused who is presiding over a police force in a state. So this has of course been, happening. Now the point I want to make is that 2 points in conclusion. First is that when the BJP claims that it is hard on national security, that it works for national security, that Congress and left and all of these are beholden to their vote banks and so therefore are not very committed to national security, by which of course they mean कि मुसलमानों को खुश करने के लिए टेररिज्म पे सॉफ्ट है, क्रूडली उसका मतलब उनका कहना यह है। लेकिन हम लोग को उनकी इस क्लेम को भी सब्जेक्ट करना चाहिए स्क्रूटनी और क्वेश्चनिंग के लिए। इफ़ यू सी व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द इशरत केस इटसेल्फ, you have the biggest, probably the biggest and the most important terrorism trial in this country, which is the 26/11, the Bombay case, the Bombay massacre, and we know that Kasab has been hanged and so on. Now, one of the prime accused in the case is David Headley.
Now, David Headley has not been extradited to